नमस्कार, मैं अरिशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूकर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज अपने शहर लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सुबह आसपास शुभांशु शुक्ला लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कैप्टन शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से लेकर शहर के प्रमुख चौराहों तक भाजपा कार्यकर्ता और लोग शुभांशु पर फूलों की बारिश कर रहे थे। लखनऊ शहर की सड़क पर जब शुभांशु शुक्ला का काफिला गुजरा, तब सड़क के दोनों और उनकी एक झलक देखने को लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई। अपने स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि आज सुबह मैं बहुत थका हुआ था। फिर मैंने आप बच्चों को सड़कों पर देखा और मुझे बताया गया कि आप सुबह 7:30 बजे से वहां खड़े हैं। मैंने आपको पसीने से तर मुस्कुराते और इतनी उत्साहित देखा कि मेरी थकान गायब हो गई। सफल होने के लिए केवल दृढ़ता की आवश्यकता है। मेरे समग्र अनुभव में मुझे लगता है कि भविष्य बेहद उज्जवल है। हम सही समय पर हैं, सही अवसर मौजूद है। और आइए देखते हैं शुभांशु शुक्ला ने क्या कुछ कहा। Early morning flight. I woke up at 4. I had an engagement yesterday. Was able to sleep at around 12. I was very tired sitting in the flight, even sitting in the car when we were coming out of the airport and everything. And then I saw you kids on the road, on the streets. I was told you were there since 7:30 in the morning. I saw you sweating. I saw you smiling. I saw you so excited, and all my tiredness it just went away. I also remember there was a time when I used to be standing in these parades holding a flag. I never liked it. I used to be very disgusted, you were made to walk on the streets and, why are we doing this? But it was a very different feeling today. I did not see that disgust or that feeling of despair on a single face. I saw all of you smiling. I saw all of you so excited to just be there and just be doing this. So thank you so much for that. I am told that I do not have a lot of time. I will be interacting with you subsequently, but I have grown up here in this school. I have done my entire schooling here and sitting on these chairs that you are sitting right now. And I saw you performing on the stage, the fine bunch of kids who were doing exceptional performances out here. Let me tell you, I wasn't even halfway there what you did. I was not as talented as you are. And if I could reach where I reached with being what I was, I can only imagine what you kids are going to do when you grow up in the future. The only thing that is required is perseverance. Nothing else, just perseverance. And to give you an example of how the school speaks about perseverance, I would take the example of our respected manager, City Montessori School, Geeta ma'am. I was in Delhi and I was meeting the Honorable Raksha Mantri, and I was sitting in his private secretary's office, and he, after having the initial conversation, he walks up to me and he says, "Sir, please लखनऊ चले जाइए। सर, गीता मैम ने परेशान कर रखा है, सर आप लखनऊ चले जाइए।" I think she has called him up. She is haunting him by writing letters and conversations and, not letting go. Yes, so I think the spirit of not giving up comes from here, and I want to see it in each and every one of you. When you grow up, don't ever give up and keep pursuing the great things that you will do. ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।